So in our last class, we studied about energy. That energy means capacity to do work, and we studied about that. Energy is basically the different types of energy, like chemical energy, light energy, mechanical energy, and mechanical energy is divided into, or it is of two types: mechanical energy is of two types, that is kinetic energy and potential energy. Potential energy, or you can say that mechanical energy is equal to kinetic energy plus potential energy. The sum of kinetic energy and potential energy is equal to mechanical energy. Now we have a topic: conservation of energy. Now, energy, there was a law of conservation of energy, or you can say that law of conservation of energy. It states that energy can neither be created nor be destroyed, but converted from one form to another. Like for example, suppose we have pump in our house. So pump, we are running pump with the help of electricity. Pump is converting water, is lifting water, it's lifting water, which is mechanical energy. घर पे जो हमारे पंप होता है बिजली से चलता है. पंप जो है पानी को ऊपर फेंक देता है, में ऊपर लिफ्ट करता है. तो वो लिफ्ट करने के लिए कौन सी एनर्जी हो गई? वो मैकेनिकल एनर्जी हो गई. या फिर आप देख सकते हो हमारे घर में ये फैन होता है, फैन से मोटर चलती है, मोटर चलती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी से. इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है मैकेनिकल एनर्जी के अंदर, और उस मैकेनिकल एनर्जी से जब पंखा चलता है तो हमें हवा मिल जाती है. ठीक है. सो इसी तरीके से एनर्जी किसी न किसी चीज में कन्वर्ट होती रहती है, वो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती. चलिए, बट इसी चीज में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अंदर एक आता है दैट मैकेनिकल एनर्जी remain constant, or you can say that sum of potential energy plus kinetic energy is constant. कैसे इसको प्रूव करते हैं? प्रूफ, दिस इज इंपॉर्टेंट. सपोज ये ग्राउंड है, ये एक हाइट है h. ठीक है. यहाँ पे ये बॉडी है ऑफ मास m. सो a body of mass m at height h is kept u is equal to 0 meter per second, and acceleration will be equal to g meter per second square. Okay. Now suppose this is point A and this is point B and this is point C, and between A and C this is x. So B and C will be equal to, so this is h and B and C will be equal to h minus x.
Okay. Now at point A, we know that mechanical energy is equal to kinetic energy plus potential energy. Now at point A, kinetic energy is there any velocity? Formula for kinetic energy is half mv square plus mgh. As body is at rest, so it will be 0 plus mgh. So mechanical energy will be equal to mgh. Is that clear? Manu, Tejaswini, is that clear बच्चे? सर दोबारा बताना। हमारे पास 3 पॉइंट है A, B और C। इन तीनों पॉइंट पे we are going to prove that kinetic energy plus potential energy remain constant. पॉइंट A है, एक बॉडी है मास m की, ठीक है। इसकी वेलोसिटी हमने यहाँ पे 0 है, जब स्टेडी स्टेट पे है ये, तो इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो अब इस पोजीशन पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? m इंटू जी इंटू h, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ओके, मास, and g is acceleration due to gravity. So mgh will be equal to the potential energy. Kinetic energy क्या होगा? ये ऑब्जेक्ट क्या है? रेस्ट पे है, so velocity will be equal to 0. So kinetic energy will become 0. So mechanical energy will be equal to m into g into h. Got it clear? Yes. Clear? ठीक है जी। Now at point B, mechanical energy is equal to kinetic energy plus potential energy. Now at point B, distance covered is x. So we have to find out velocity. Now velocity at point B at D, v square minus v square is equal to u square plus v square minus u square is equal to 2 as होता है, it will be equal to plus 2 gs. This will be the formula. So v square will be equal to 0 plus 2 gs. Here s is equal to x, so it will be 2 gx. So v square will be equal to 2 gx. Is that clear? Yes or no? Yes, sir. Tejaswini? Yes. Okay ji. So mechanical energy will be equal to half m v square. In place of v square, I can write 2 gx. Clear? Okay. Now potential energy. Now height of object at B. M into G into height. Height is h minus x. H minus x. This will be equal to mgx plus mgh. mgh minus mgx. This will be cancelled out. It will remain mgh. So mechanical energy will again equal to mgh. Is that clear? Yes or no? Yes. Is that clear? Yes. Okay ji. Tejaswini? Yes, Now sir. at point C. Point C. Mechanical energy is equal to again potential energy plus kinetic energy or kinetic energy plus potential energy. Now at point C. Again, v square is equal to u square plus 2. इसको थोड़ा सा लिख देता हूँ मैं।
V square is equal to U square plus 2GS. V square is equal to 0 plus 2G. Now S will be equal to, the body is at this position. S will be equal to distance covered will be H. Clear? Is that clear? So this will be equal to half M. In place of V square, you can write 2GH. Now, this is kinetic energy. This is kinetic energy plus potential energy. Now, potential energy is equal to M into G into H. Now, here height is 0. So, this will be equal to half into 2 into G into H plus 0. This will be 0 and this is M. So it will be half M into G, wait, 2 and 2 cancel out, plus 0. So this will be equal to mgh. Got it? Yes, sir. So in this way, we can say that at 3 positions, at all these 3 positions, the kinetic energy is mgh. Sorry, mechanical energy is mgh, which means that mechanical energy remains conserved. Okay? Is that clear? Yes, sir. Any doubt on this? No, sir. ठीक है जी मनु कोई डाउट बेटा इसके अंदर No, sir. जल्दी से क्विकली इसको रिवाइज करो एक बार जल्दी इसको रीड करो जल्दी से क्विकली इसको ओके दोबारा देखो एक बार फटाफट पावर it is defined as the rate of change of energy. Power is equal to energy upon time and unit of power is equal to joule upon second, that is joule second, which is equal to watt, and it is based on the name of a scientist, James Watt. James Watt was the name of the scientist on which name this watt is there. Okay. Now 1 watt is equal to 1 joule per second. Sir, Yes. sir, gravitation chapter syllabus में है. So 1 watt is equal to 1 joule upon second. That is 1 watt is defined as the power consumed when 1 joule of energy is used for 1 second. जब 1 second when 1 watt is defined as power consumed when 1 joule of energy is used for 1 second. Okay. Now power is, if suppose power, if we say power is 5 watts, इसका मतलब क्या है? That 5 joule of energy is consumed in 1 second. And always remember that this watt is a very small unit. So generally we use kilowatt, which means 1000 watts. Okay. Is that clear up to this point? Any doubt? Manu, any doubt, beta? No? No, sir. Okay जी. अभी हमने जो पावर का फॉर्मूला किया है, पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम. अगर मैं टाइम को लेफ्ट हैंड साइड में लेके चला जाऊं तो एनर्जी क्या हो जाएगी? पावर इनटू टाइम. फाइन. तो एनर्जी विल बी इक्वल टू वॉट इनटू सेकंड. यूनिट ऑफ एनर्जी चेंज हो गया मेरा, वॉट इनटू सेकंड. तो मेरे पास ये आ गया एनर्जी इन टर्म्स ऑफ वॉट सेकंड. अब यहां से मैं डिफाइन करता हूं कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी. नाउ कमर्शियल यूनिट का मतलब क्या है? जिस यूनिट में हमारे घर का बिजली का बिल आता है वो यूनिट क्या होती है? वो होती है हमारे पास किलोवाट आवर. इसका मतलब है 1000
watt hour, which means that 1000 watt equipment or machine is run for 1 hour. So it is defined as the energy consumed by a 1000 watt machine when we switch it on for 1 hour. Clear? That is known as 1000 kilowatt hour. Now relation between kilowatt hour to joule. Okay, ji. Now you can say if I convert watt into kilowatt and second into hour, so this will become kilowatt hour. Okay. Now 1 kilowatt hour is equal to, kilowatt means 1000 watt into 1 hour. Unit watt is equal to joule by second. Joule by second पढ़ा था हमने ये. So this will be equal to 1000 joule upon second. And 1 hour is equal to 60 into 60 seconds. Fine. Second cancel out. So this will be equal to 3, 6, 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Joules is equal to 3.6 into 10 power 6 joule. Got it? Clear? Which is equal to 3.6 into 10 power 6 joule. कोई डाउट इसके अंदर? Any doubt in this? No, sir. ठीक है, जल्दी से फटाफट इसको एक बार रिवाइज करिए, जल्दी से देखिए इसको. तो हमने यहाँ पे एक पावर का फॉर्मूला पढ़ा था, ये वाला एनर्जी अपॉन टाइम. पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम. अब एनर्जी अगर काइनेटिक एनर्जी होगी तो ये हाफ mv स्क्वायर अपॉन टी हो जाएगा फॉर्मूला. ठीक है, और अगर ये आपके पास में पोटेंशियल एनर्जी होगी तो mgh अपॉन टी हो जाएगा. तो ये दोनों ही फॉर्मूले आपके पावर के हो सकते हैं. तो पावर के आपके पास 1, 2, 3 फॉर्मूले आपके पास यहाँ पे आ गए. ठीक है, गॉट इट. चलिए, तो अब ये हमारी इस चैप्टर का थ्योरी पोर्शन हो गया सारा फिनिश. एक बार हम फटाफट देखते हैं एनसीईआरटी के अंदर. रेट ऑफ डूइंग वर्क हमने पढ़ लिया. हमने ये रिलेशन बिटवीन ये भी हो गई हमारे पास. देन कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज किलोवाट आवर, ये भी हमने करा. यस. सो वॉट एवर द थ्योरी पोर्शन वी हैव इन दिस चैप्टर इज फिनिश्ड. सो कल हम लोग करते हैं इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल. ठीक है, तो दैट इज ऑल फॉर टुडे. बाकी आपको कोई डाउट है तो यू कैन आस्क.